Hello and welcome back to my channel, which is AMS MBBS lectures, guys. In today's session, we're going to just carry further the topic of bacterial genetics. This is basically the part 2 video of the bacterial genetics wala chapter, and we have already covered a lot of topics in the previous video. The first introductory topic, that is principles of bacterial genetics, where we have discussed in short the DNA, the RNA, the polypeptide synthesis and plasmid के बारे में details already हमने cover up कर ली हैं. Today's video is all about the second main topic, that is mutation के ऊपर होगा, and upcoming videos are going to be based on the following topics, that is horizontal gene transfer and gene transfer by artificial methods. So let's start with something called as mutation. But before going into the details of mutation, I want to talk about a short topic that is called as your gene transfer in bacteria, guys. Okay? Let me give you an introduction to this topic and then we're going to shift towards mutation. Okay? देखो guys, अब कोई भी particular bacteria है, right? For a particular bacteria, it will undergo something. With time, it will undergo some sort of genetic variations आते हैं. इसके वजह से क्या होता है? It will acquire some new genes, okay? And this entire thing, okay, this whole process is basically taking place via mechanism, and that is called as mutation. ठीक है, ये किसके वजह से हो रहा है? इट इज ऑल अकरिंग ड्यू टू समथिंग कॉल्ड एज म्यूटेशन वाले प्रोसेस के वजह से चीज हो रही है. यस और नो? नाउ अब ये जो न्यू जीन्स आप लोग को मिली है यहाँ पर, दिस न्यू जीन्स आर ट्रांसमिटेड, ओके, फर्दर, दे आर ट्रांसफर्ड फर्दर either via something called as vertical gene transfer. Vertically it is transmitted. ठीक है, vertical gene transfer की जब मैं बात करूंगा तो it would simply remind you of something that is called as the bacterial division. And that is nothing but bacterial division is what? That is binary fission. That is from the parent cell. Okay, जो genetic material is getting transmitted vertically. It is vertically. Direction is important over your genes. कैसे ट्रांसमिट किए जा रहे हैं? They are transferred vertically towards the daughter cells. That is what is remain. Okay, this is what is called as your vertical gene transfer. On the other hand, we have the second method that is called horizontal gene transfer. मतलब from bacterium A towards bacterium B, अगर मेरे मतलब एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना इनटू दी surrounding bacteria, that is what is referred to as horizontal gene transfer. And we have four important things over here, that is transformation, transduction, lysogenic conversion and conjugation. Details of this topic is going to be covered up in the upcoming video, okay, in the next video. But right now we are going to cover up the details of something that is called as mutation. Before actually starting, एक और ही चीज यहाँ पे देखना था. कैन यू सी ओवर हियर दैट जो जीन्स थी गाइस, ओके, जो म्यूटेटेड जो न्यू जीन्स थी, दैट फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेल इट इज ओके ट्रांसफर टू द अदर. व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट दीज जीन्स आर हेरिटेबल. एंड ये जो बैक्टीरिया होती है, इट अंडरगोज जेनेटिक वेरिएशन. यस और नो? दीज जेनेटिक वेरिएशंस, दीज आर वेरी रैंडम. ठीक है, रैंडमली ये चीज होने वाली है. इट इज नॉट लाइक कोई रीजन है या कोई स्पेसिफिक चीज की वजह से ये चीज हुई. नो, randomly bacteria will undergo some genetic variations, that is the bacteria will undergo mutations. Let's have a look on the definition of mutation, guys. Mutations are nothing but, these are nothing but random, undirected, heritable variations caused by a change in the न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जीनोम का, उसके अंदर कभी चेंज आ जाता है, दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज म्यूटेशन. एंड म्यूटेशन एक बहुत ही नेचुरल इवेंट होता है गाइस, जो कहीं ना कहीं इट इज टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम इन ऑल द डिवाइडिंग सेल्स. हर डिवाइडिंग सेल के अंदर हर समय कहीं ना कहीं कभी ना कभी म्यूटेशंस होते ही रहते हैं गाइस. ठीक है, एंड याद रखना म्यूटेशन जो होता है गाइस, इट इज अफेक्टिंग द जीन, इट इज अफेक्टिंग द जीनोम ओवर हियर. तो बेसिकली हमारे डीएनए के अंदर, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डीएनए, डीएनए इज बेसिकली हैविंग मल्टीपल जीन्स, राइट? इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल जीन्स एंड म्यूटेशन कैन अफेक्ट any gene, कोई भी जीन को अफेक्ट कर सकता है ये. Let's have a look on the frequency of mutation, that how common mutation is. So whenever I deal up with something that is called as the frequency of mutation, it is nearly 10 raised to minus 2 से लेकर के 10 raised to minus 10 mutations per bacterium per division. So this is like the frequency, this is the rate at which mutation occurs. 10 raised to minus 2 to 10 raised to minus 10 per bacterium per division. Done with the definition. Let's jump towards the next thing, that is how mutation are taking place, how mutation occurs. So there are two ways, okay, overall there are like two ways through which mutation can take place. Either it is something called as spontaneous mutation or we have something called as induced mutations. बच्चा, spontaneous mutation की बात करूं, these are the one which occurs naturally हो रहा है. ठीक है, these are occurring naturally over here.
Over here we don't require any mutagens, ठीक है, mutagens की जरूरत नहीं पड़ती है. Now a question mark, what is a mutagen? Mutagens are nothing but these are agents which are capable of inducing mutagenesis, ठीक है, which can cause which can cause mutation in an organism. Those agents, those substances are referred to as your mutagens, which are definitely, in case of spontaneous mutation, we do not require mutagens. On the other hand, the second category, that is called as the induced mutations के अंदर definitely we are inducing it. So we require the mutagens. Yes, they are required over here. ठीक है, they are required. They are totally required over here. Yes or no? Let's have a look on some examples of mutagens. जब मैं बात करता हूँ examples की, तो we have physical agents and we have chemical agents. Physical agents, ultraviolet radiations. Have you heard of this UV rays or ultraviolet radiations? One of the common examples for physical agents. On the other hand, if you go with something called as the chemical agents, we have three examples over here. That is alkylating agents. Okay, we have something called as the alkylating agents. Then we have something called as the 5-bromouracil. 5-bromouracil. And we also have something called as the acridine dye. Okay, acridine dye over here. Okay. So I hope how mutation take place, the two ways are clear with some examples of mutagens and definition of mutagen is done. And yeah, before going to the next slide, UV rays जब हम बात करें physical agents की, remember जो DNA के जो pyrimidines होती है, that is nothing but your cytosine and your thymine. Okay, these are kind of more vulnerable. Okay, these are more vulnerable to your UV rays. These are very much vulnerable to UV rays. UV rays से ज़्यादा vulnerability होती है इन लोगों की, cytosine and thymidine. Okay, thymine and cytosine, these are two pyrimidines of the bacterial DNA. You know the nitrogenous bases, right? प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल्स कवर अप करी थी बैक्टीरियल डीएनए की, जहां पे हमने बात करी थी अबाउट ऑल द नाइट्रोजनस बेस, उसके स्ट्रक्चर्स एंड सारी डिटेल्स को. लेट्स जंप टुवर्ड्स सम ओके एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिगार्डिंग म्यूटेशन. ठीक है, अब मैंने बोला म्यूटेशन के वजह से बेस सीक्वेंसेस में चेंज आ रहा है, तो अल्टीमेटली जो जीन जिस पर्टिकुलर चीज के लिए कोड कर रही थी, वो चीज जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आने वाला था वो भी चेंज हो जाएगा. यस और नो? तो अल्टीमेटली जो फंक्शन होगा वो चेंज होगा. तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ओवर हियर. ओके, वी हैव टू मेजर पॉसिबिलिटीज ओवर हियर. Either mutation can involve okay some sort of lethal changes और some sort of minor function का alteration हो जाएगा या involvement देखने मिलता है. अगर lethal या तो minor function का involvement होता है over here, तो ये जो ऐसे टाइप की चीजें होते हैं ना गाइज, दे आर यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड. मतलब म्यूटेशन हुआ एंड कोई लीथल चेंज हो गया, मतलब जो चेंज आया वो लीथल है कहीं ना कहीं, एंड या तो फिर कोई माइनर फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो दे आर काइंड ऑफ नॉट एक्सप्रेस्ड. ओके, ड्यू टू म्यूटेशंस ये एक्सप्रेस नहीं होते. इस वजह से ज्यादातर जो म्यूटेंट्स होते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द म्यूटेंट्स दे गो अनरिकॉग्नाइज्ड. कोई रीजन पूछेगा तो बोलने का इट इज मेनली बिकॉज ऑफ सम लीथल चेंजेस और माइनर फंक्शन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से दे यूजुअली आर नॉट एक्सप्रेस्ड. इसके वजह से जो म्यूटेंट्स होते हैं ज्यादातर दे गो अनरिकॉग्नाइज्ड. द सेकेंड स्टोरी लाइन दैट इज, अगर कोई मेजर फंक्शन का म्यूटेशन की वजह से कोई मेजर फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, अगर कोई मेजर फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज बेस्ट अप्रिशिएटेड बच्चा, बिकॉज कोई बड़ा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन में चेंज आया ना, तो वो बहुत सिग्निफिकेंटली मतलब रिफ्लेक्ट होगा उस बैक्टीरिया के अंदर, है ना. एंड देयरफॉर एंड दिस सेम थिंग कैन बी ऑब्जर्व बाय सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. थोड़े एग्जांपल से समझते हैं इसको. ठीक है, मेकॉन्कीज अगार, यू नो मेकॉन्कीज अगार इज अ सेलेक्टिव अगार. ऑलरेडी वी हैव डन द स्टोरी ऑफ और we have discussed all about the culture medias, the different culture methods. Videos available है जहाँ पे I've covered Mekong agar and all the different types of culture medias available in complete detail. So do watch it if you haven't already. अब बात करते हैं मेकॉन्की अगार पे. For those who already have studied this or already watched my video, ये क्विक रिकैप होगा. एस्चेरिशिया कोलाई, द मोमेंट आई से यू, नॉर्मली कभी एस्चेरिशिया कोलाई को हम लोग मेकॉन्कीज अगार पे ग्रो करते हैं, तो यू नो एस्चेरिशिया कोलाई इज अ लैक्टोज फर्मेंटर, एंड देयरफॉर आप लोग को वो मेकॉन्की अगार के ऊपर इट इज गोइंग टू गिव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज पिंक कलर्ड कॉलोनीज. यस और नो? पिंक कलर की कॉलोनीज देखने को मिलती है. नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने बोला तुम्हारा एस्चेरिशिया कोलाई इट अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन, it will lose the property of lactose fermenter and it will become a non lactose fermenter. And Escherichia coli को मेकॉन्ग की अगार पे ग्रो कर रहे हो and you getting a pale colony, what is the conclusion guys? क्या this particular okay strain or this particular species of Escherichia coli is kind of got mutated. Yes or no? So I hope mutation से related ये वाला point भी clear हो गया है.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट गाइस, अब म्यूटेशंस हो रहे हैं, मैंने बोला ना अभी, लाइक जीन सीक्वेंस चेंज होगा, फाइनल प्रोडक्ट चेंज होगा, अल्टीमेटली आपका जो फंक्शन होता था, नॉर्मल फंक्शन या जो होता है एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, म्यूटेशन के बाद उसमें चेंजेस आएंगे, दैट इज म्यूटेशन कैन रिजल्ट इनटू मॉडिफिकेशंस, राइट। तो म्यूटेशन कोई भी जीन को अफेक्ट कर सकता है, एंड उसके वजह से इट कैन मॉडिफाई any characteristic function of the particular bacterium or the organism बच्चा। Let's have a look on some examples, जैसे कि sensitivity to bacteriophage, क्या म्यूटेशन की वजह से, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज आर नथिंग बट जो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को किल कर देता है, यस और नो। तो बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर लाइक, दे हैव टू लाइक मेक श्योर कि मतलब हम लाइक वी आर नॉट डिस्ट्रॉयड और किल्ड बाय एनी बैक्टीरियोफेज, राइट। बट मैंने बोला उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में कोई म्यूटेशन हो गया, एंड जो भी प्रोटेक्टिव प्रोटीन था या प्रोटेक्टिव कवरिंग थी जो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रॉम अ बैक्टीरियोफेज, म्यूटेशन की वजह से अब वो नहीं बन पा रही है। तो व्हाट इज हैपनिंग, द बैक्टीरिया हैज बिकम ससेप्टेबल, इट हैज बिकम sensitive towards your bacteriophages, so that is one of the examples of this thing। second, जैसे कि मैंने बोला कि प्रोटीन्स का प्रोडक्ट मतलब एक म्यूटेशन हो गया, एंड कैप्सूल एंड फ्लैजिला के लिए जो प्रोटीन्स बनते थे, जो लगते हैं, उनका प्रोडक्शन बंद हो गया म्यूटेशन की वजह से, तो देयर इज लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस कैप्सूल और फ्लैजिला। Similarly, loss of virulence, alteration in the colony morphology, alteration in the pigment production, drug susceptibility, and biochemical reactions, antigenic structure के अंदर changes, ये सारे important examples है for the modifications occurring due to mutations। I hope आपको ये clear हो गया यहाँ पर ये वाला part भी। Next comes into picture that is called classification of mutation types, ठीक है। Either the mutation can be a small scale mutation or it can be a large scale mutation। स्मॉल स्केल म्यूटेशन की बात करूं, फ्रॉम द नेम इट इज वेरी मच क्लियर, समथिंग ए वेरी स्मॉल इन नंबर, ठीक है। सी जो स्मॉल स्केल वाले म्यूटेशन ज्यादातर आपके बैक्टीरिया के अंदर होने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम एग्जांपल्स, जैसे कि वी हैव पॉइंट म्यूटेशन, या तो एडिशन और डिलीशन म्यूटेशन कैन टेक प्लेस। पॉइंट म्यूटेशन मार्क द टर्म सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। अगर मैंने बोला एडिशन या तो डिलीशन हो गया एक ही, ओके, वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एडिशन या तो फिर डिलीशन हो गया, that is some examples of small scale mutation। on the other hand, large scale mutation, these are something which are occurring in the chromosomal structure। large scale पे हो रहा है ना, तो क्रोमोसोम का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको चेंजेस देखने मिलेंगे यहाँ पर। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल जीन डुप्लीकेशन हो गया आप लोग का, तो वो आप लोग को देखने मिल सकता है, या तो फिर देयर कैन बी एडिशन और डिलीशन। अगेन आपने देखा कि लाइक वी हैड अ लुक ऑन समथिंग दैट इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल के अंदर भी देखा कि एडिशन डिलीशन था, लार्ज स्केल के अंदर भी देयर इज एडिशन एंड डिलीशन, बट द डिफरेंस इज इन द नंबर। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड या सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एडिशन या डिलीशन होता है, इट इज स्मॉल स्केल, एंड इफ सेवरल अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के अंदर चेंजेस मतलब एडिशन या डिलीशन हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल म्यूटेशन। आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज आल्सो क्लियर। Next, the last thing that is called as detection of the isolation, detection and isolation of mutants. Okay? Now, how can we detect the whole thing? Again, there are two important ways to do so. First method, that is a genetic method, and the second we have something called as a phenotypic method. Let's cover the genetic method. One single genetic method that is called as the gene sequencing, guys. Okay? And this gene sequencing ka method is like a method of choice these days. Okay? It is a method of choice for the detection and isolation of mutants. Okay? And on the other hand, we have some important phenotypic methods. So let me name them. We have fluctuation test, we have the replica plating method, and we also have the amaze test over here. Fluctuation test is the one which is going to demonstrate the presence of spontaneous mutation. Okay, it is going to demonstrate something called as the spontaneous mutation in the bacteria. And on the other hand, the replica plating method is the one which is going to demonstrate something called as auxotrophic mutants. Auxotrophic mutants. And these are the mutants, okay, which does not grow, okay. These auxotrophic mutants जो होते हैं ना बच्चा, these are the one which does not grow in absence of a particular nutrient, okay, in absence of a particular nutrient, of a particular nutrient.
है ना, कोई भी एक स्पेसिफिक न्यूट्रेंट अगर एब्सेंट है, ये म्यूटेंट्स ग्रो नहीं करेंगे. तो दैट इज व्हाट इज रेप्लिका प्लेटिंग मेथड. इट डेमोन्स्ट्रेट द ऑक्सोट्रोफिक म्यूटेंट्स. एंड लास्टली एमेज टेस्ट जो होता है ना, इट इज बेसिकली अ टेस्ट डन टू परफॉर्म द, ओके, इट इज समथिंग व्हिच इज परफॉर्म टू टेस्ट द कार्सिनोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ म्यूटाजेंस. ठीक है, जो हम लोग के म्यूटाजेंस होते हैं ना, उन लोग की कार्सिनोजेनिसिटी को चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए एमीज टेस्ट होती है. मतलब ये जो पर्टिकुलर म्यूटाजन है, क्या वो कार्सिनोजेनिक है या नहीं है, उसके लिए होता है. ठीक है, so I hope this concept is also clear over here. The detection and isolation methods of mutants are also clear, and with this we mark the end of something that is called as the this video, that is mutation के बारे में सारी information जो possible थी, from definition, from how it takes place, okay, some relevant points, okay, then your modifications associated with the mutation, and lastly we all covered the classification of mutation type, that is small scale, large scale, and detection of isolation of the mutants. ठीक है, that is it for this video, guys. Thank you so much for watching. If you found this content useful, then do like, share, and subscribe to my channel, which is AMS MBBS Lectures. And again, thank you so much for watching. And if you're having any sort of questions or queries, comment down. I'm there to answer it. And yeah, till that time, keep learning, keep studying. See you all in the next one. Bye bye.